Hello, friends. Welcome back to Fenny for the Soul. Today is going to be a very special episode. I'm taking you back in time to 2004, when I was part of a small Urdu theatre group called Raabta Foundation in Pune. We've taken a play all the way from Pune to Lahore. We took part in this World Performing Arts Festival in Lahore, and we performed an Urdu play called Jis Lahore Nahi Dekhiya. It's a very popular play written by the noted academic Professor Asghar Wajahat of Delhi. And the play struck a chord with the common people of Pakistan. We performed it 4 times in Lahore, and we managed to build bridges with the common people of Pakistan for sure. This whole video footage that I shot has been uh, made into a 45-minute travel documentary, which we had premiered in 2012 in the Film and Television Institute in Pune, which the noted filmmaker Sham Benegal was the chief guest, and he inaugurated the film. So I'm taking you on that 45-minute journey. So sit back and enjoy the lovely music by Strings, the Pakistani pop rock band, which is graciously given their music background score. क्या हो रहा है? REC आया record. Record आया? Means REC is record and red आया है. Now I can see Milind. And it is being recorded. It is recorded because 2132, 2133, 2134 ये अभी ये sound भी आ जाएगा capture. ये किसका वो बेल का साउंड, मिलिंद का चेहरा. अभी ये एक ही बात है, ये जो है ना, ये देखो ये दिस मेटल थिंग, इफ आई प्रेस दिस इट्स ऑन वाइड, इफ आई प्रेस ऑन द राइट आई गेट मिलिंद्स चेहरा क्लोजर. समझा? ये देखो, आई गेट हिम क्लोजर. सी, इफ यू वांट समबडी क्लोजर यू प्रेस, यू ब्रिंग इट, आई विल शो यू दैट लेटर. दैट्स इट. आई वांट टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेडी रखो हाथ, एंड सपोर्ट के लिए ना लेफ्ट हाथ है ना, देखो, हाँ वो लेफ्ट हाथ इधर रख दो, इसके नीचे. हाँ, मींस सपोर्ट दैट, बस. मींस स्टेडी कैमरा, ये कैमरा जो है ना बहुत स्टेडी होनी चाहिए बस. अभी रिकॉर्ड हो रहा है, मींस मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ. हाँ, अभी रिकॉर्डिंग बंद करना है. Hi, I am Rahul Chandavarkar, a Pune-based journalist. Of course, I do not look like this anymore. This is a story of the winter of 2004, when I took Raabta Foundation, an Urdu theatre group from Pune, to participate in the World Performing Arts Festival in Lahore. India and Pakistan have been at each other's throats from 1947. 4 wars have been fought, killing and maiming hundreds of young soldiers on either side. Today, innocent Indians continue to be victims of multiple terror attacks planned and executed from Pakistan. However, in the winter of 2004, a small group of Urdu theatre walas from Pune's Raabta Foundation decided to take part in the World Festival for Performing Arts in Lahore. The 12-member theatre group optimistically believed that by staging an emotional Urdu play, Jis Lahore Nahi Dekhiya, in Lahore and interacting with common Pakistanis at the ground level, they could indeed bridge the gap between the two peoples and their governments. Of course, the group owes a huge debt to Lahore-based journalist Raina Khan, who introduced us to the Rafi Peer Theatre Workshop, the organizers of the festival, which resulted in us being invited for the festival. To some extent, our group succeeded in meeting its objective. This is the story about that journey, a journey to build bridges between two hostile neighbors. Welcome aboard. The journey began with a bus ride from Jalandhar to Amritsar and a quick breakfast at a roadside dhaba. And even as the group bit into crusty biscuit rot and gulped down hot milk, the excitement of travelling to Pakistan was palpable. Nobody had ever been to Pakistan before, and the sense of nervous anticipation could be felt in the air.
से कोई आए, कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए. We boarded the iconic Samjhota Express train at the Atari railway station on the Indian side of the border. Samjhota, which means understanding in English, is hardly an express train, considering that it took 8 long hours to cover just 40 kilometers. The train was a potpourri of emotions and history. Old men and women were traveling to meet their brothers and sisters. Little children were off to meet cousins for the first time, and Sikh pilgrims to pay obeisance at their holy shrines. This was no ordinary train journey. To begin with, there was no plan to video document this tour. But on the last night before our train journey to Amritsar, I said we must buy a Sony Handycam. The first shop that we went to was shut. So we went all the way to Gurgaon, and in the Sony store, whatever Sony Handycam I could see on the shelf, I picked it up and we were off. The problem was I had never used a Sony Handycam in my life. So on the train journey, I had the operation manual in my left hand, the camera in my right hand, and I was trying to figure out what is the recording button and what is the on off button. So that's how we began. I have video documented this whole film, and without a tripod. So there has been a lot of shake, and that you'll have to pardon me. The organizers sent a bus to take us to the festival venue, the Al Hamra Center, adjacent to the Gaddafi Cricket Stadium. The mood for the tour was set during the bus journey itself. The play Jis Lahore Nahi Dekhiya, which has been written by Asghar Wajahat, revolves around the post-partition period of 1947. It tells a story of a Muslim family which migrates from Lucknow to Lahore. The family is allotted a haveli belonging to a Hindu matriarch, Mai. Mai's family has been killed in the carnage. Obviously, a clash over the ownership of the haveli arises. A local thug, Yaqub Khan, wants to eliminate Mai. However, everybody rallies around Mai, communicating a strong message of peace and harmony. ये घूम रही मैं कौन हूँ तुसी दसो कौन हो जो बिना पूछे मेरे घर घुसाए साना कैसा मुहतरमा ये मकान हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट किया है अलॉट पलॉट मैं नहीं जानती ये मेरा घर है ये कैसे हो सकता है अरे किसी से भी पूछ ले ये रतन ना जोरी की हवेली है मैं उसी वाह देखिए हमारे पास कागजात हैं ये हवेली आपको खाली करनी पड़ेगी भगवान कौन हो गया इतना सारा सामान लेकर घर पे घुसा है ये क्या धर्मशाला है चलो उठा सारा सामान चलो 22 कमरों की हवेली अलॉट होने के बाद भी मुश्किल में फंसे 22 कमरों की हवेली का कबाड़ी निलाम कर दे तो परेशानी बात करियो अम्मा यार इनकी जान के लाले पड़े और आप लोग क्या हंस रहे हो तू ही बता दे अरे भाई दरअसल आप लोग चाहते क्या है गुड़िया हवेली से चली जाए उसे कैंप दाखिल किया जाए और वो हिंदुस्तान चली जाए हिंदुस्तान नहीं भारत का ये भारत जी
वैसे हमारे अब्बू गए हैं कस्टोडियन के ऑफिस। कस्टोडियन? कस्टोडियन। और ये रतन जौहरी की हवेली वहाँ तो परसों को आया भाई ताने पर सामान वामान लाद करके। भाई वहाँ कुछ मुश्किल है। क्या बात है? उनका लड़का मिला था, यहीं आया था दूध लेने। भाई रतन जौहरी की माँ तो हवेली में रह रही है। नहीं, हाँ भाई वही लड़का बता रहा था। बड़ा परेशान। वो बच कैसे गई? बच कैसे गई वो? भाई आपके जज्बात को मजरूह करना हमें मंजूर नहीं है। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। नहीं नहीं, दिल कितने दुख गया है, उसने तो मैंने खुश कर दिया। बेटा जी जरा इधर आ तो जी, एक बार फिर से कह दे दादी। हाँ मतलब यही छुप गई है, भारत नहीं गई है? तो फिर क्या हिंदू औरत यहाँ रह सकती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं? कुछ समझे नहीं मौलाना जी। हुक्म खुदावंदी है कि जब कोई मुशरिकों में से तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दो। लेकिन मौलाना साहब, वो हिंदू औरत भारत चली जाएगी तो वहाँ हमारा कोई मुसलमान भाई रह सकेगा? क्या अल्लाह का हुक्म मुसलमान भाइयों के लिए काबिल कबूल नहीं? हमने अपने मुसलमान भाइयों का कत्लेआम देखा है, हमारे दिल में बदले की आग भड़क रही है। हम किसी काफिर को इस मुल्क में नहीं रहने देंगे। इरशाद है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और जो जमीन वालों पर रहम नहीं करता, खुदा उस पर रहम नहीं करता। रुक जाओ दादी, रुक जाओ। तुम्हें मेरी कसम, हमें छोड़ के मत जाओ दादी, मत जाओ हमें छोड़ के। अगर तुम कहीं गई तो फिर मत जाओ दादी, छोड़ के मत जाओ हमें दादी। दादी, दादी क्या आप अपनी पोती राधा को इस तरह छोड़कर चली जाती? बताइए ना, उसे इस तरह छोड़कर चली जाती आप? दादी, दादी क्या मैं आपकी राधा नहीं बन सकती? नहीं बन सकती आपकी राधा मैं। रुक जा याकूब, बस करो ये खून करामा याकूब। अलीमा, तू मुझे रोक रहा है? तू तो यहाँ क्या ना? मत रोक मुझे, रुक जा। मैं इंसान हूँ याकूब। रुक जा याकूब, याकूब ये तुम गलत कर रहे हो, बीच में मत आना। रुक जा तुम, मत आना बीच में। याकूब, याकूब रुक जा तुम। सारे उधर से हैं। अम्माई को मारना नहीं है। बहुत सारे शोज करने। कोई और भी आप लग रहे हैं यहाँ पर, कोई और? हम ग्रेट। और लाहौर वालों से भी बहुत प्यार मिला है। बहुत जबरदस्त। ये हमारे डायरेक्टर हैं मिलिंद इनामदार। किया है। ये है मानसी लोनकर तन्नो, जिन्होंने बेगम का रोल अदा किया है। मोहम्मद अशफाक मिर्जा का रोल अदा किया है। उनके फर्जंद हैं आदिल अत्तार।
हलीमा का अदा किया है निसार अहमद ने और मौलाना थे याकूब पीरजादे और हमारे लोग और चेले चापट में ये है जाकिर हुसैन, वो है राहुल चंदावरकर, ये हमारे शो के कोऑर्डिनेटर हैं। मेरा नाम है सैयद सईद अहमद, मैंने नासिर का बहुत ही एंजॉय थीम एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट। दिस एफर्ट शुड बी भाई थोड़ा सा Not just the Lahore audiences, but even the Lahore newspapers were very kind to us and gave us some very good publicity. Every night at the festival was a musical jamboree with every conceivable kind of music, be it Caribbean, East European or subcontinental on display. The magnificent Alhambra Open Air Colosseum was the hub of all activity, as music lovers thronged the venue like bees to a hive. We headbanged with the Lahore rock band Junoon, danced to the soothing tunes of strings and clapped along with Rahat Fateh Ali Khan's Qawwali troupe. महफिल में बार बार उन्हीं पर नजर गई, हमने बचाया मगर फिर उधर गई। चले चले आज़माने आज दिल अजी छाप तिलक सब छाप तिलक सब There's another very interesting story about the people of Lahore. We had taken a trophy from Pune to Lahore for the Pirzada family, the organizers of the festival. Now we hadn't embossed it, so we searched in some of the bylanes of Lahore, the Mall Road, and found a shopkeeper who could emboss in Urdu and in English. So we gave him the job
and he said his fee would be 400 rupees. What happened is that in our conversation over a cup of tea, we told him we had come with a theatre troupe from Pune. He was very impressed that we had come from India. So the next day when we went to collect the trophy, he gave the trophy to us, very well done the work, and he refused to take the money. So we were quite flabbergasted, you know. So we said, 400 रुपए हैं आपने लेने हैं, and he said, देखो साहब आप इंडिया से आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हम पैसा नहीं ले सकते. Now this is the warmth and affection of the people of India. और शहर लाहौर के अलावा हमने यहाँ के शहर लाहौर के लोगों के बारे में जो हॉस्पिटैलिटी के बारे में जो कुछ सुना था वो उससे बढ़कर पाया. ये यहाँ है बल्कि हम बताते हम इंडिया से आए तो हमें और ज्यादा वो मिल रहा है सहूलत. अच्छा इंडिया से पान की दुकान से लेके तो चाय की दुकान, वो तो आपका राइट बनता है ना पान वाले तो यहाँ लाहौर में एक चीज़ हमने देखी कि बहुत कलरफुल है सारा माहौल जो है, वेरी कलरफुल खुशनुमा माहौल जो है इंडिया की निस्बत. हाँ मतलब आप यहाँ के बसेस देखो, ट्रक्स देखो, एवरीथिंग इज लाइक कलरफुल. तो वो हमको ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम हिंदुस्तान के बाहर हैं. तो मेरे मुँह से लाशौरी तौर पे निकला, आप कहाँ के हैं? मतलब यहीं के हैं. मेरा ये पर्सनल आइडिया है वो ये कि अगर इंडियन फिल्म नाकाम होती तो शायद उर्दू भी आज बैठ चुकी होती. ठीक है, क्योंकि गाने चले, थ्रू द वर्ल्ड चले, लोगों ने सुने और उर्दू के साथ लोगों का कनेक्शन रहा. ठीक है, अगर इंडियन फिल्म कहीं पे जाके नाकाम हो जाती तो मतलब लेट्स से 65 या 70s में जिस तरह पाकिस्तान में हाल हुआ, 70s के बाद हमें यहाँ पे कम फिल्में नजर आती. इंडिया की फिल्में भी नाकाम होती तो उर्दू भी बैठ जाती. The then governor of Punjab, Lieutenant General retired Khalid Maqbool, hosted a grand banquet for all visiting artists to the World Festival on the lawns of his official residence in Lahore. Our troupe interacted with students from the Government College Lahore, Indian actors Nadira and Juhi Babbar, and the governor, among others. Nadira and Juhi won a lot of hearts with their eloquence and charm. ये हमारे लिए बड़ी फख्र और खुशी की बात है कि हम लोग पहली बार पाकिस्तान अपना काम लेके आ सके और यहाँ की ऑडियंस को अपना काम दिखा सके. इसके लिए उस्मान साहब, उनके भाई, उनके भतीजे, उनकी भांजियाँ, सबको हजार लाख बार शुक्रिया. इतनी जैसे कि पहले अभी कहा जा चुका है कि इतनी मोहब्बत से और इतनी केयरिंग से जिस तरह से रखा है इन लोगों ने और जिस तरह से ख्याल किया हम लोगों का, ये वाकई लाजवाब है. स्पॉन्सर्स तो बहुत होते हैं, बहुत बड़ी जगहों पे जाके स्पॉन्सर हो जाते हैं, लेकिन ये अपनापन जो इस शहर से मिला और इन स्पॉन्सर्स से मिला, ये मुझे कहीं मिला नहीं इससे पहले. बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि खुदा करे हमारे मुल्कों के बीच में और बेहतर हालात हो, ये हट ही जाए सारी पाबंदियाँ, लोग ऐसे ही आ सकें लाहौर, जैसे कि मैं दिल्ली से बम्बई चली जाती हूँ, बम्बई से लखनऊ चली जाती हूँ, उसी तरह काश ऐसा हो जाए कि जब जी चाहे एक फ़्लाइट पकड़ी और लाहौर आ गए और जब जी चाहे यहाँ से कराची गए, कराची से वापस बम्बई. ज़्यादा से ज़्यादा कल्चरल एक्सचेंज हो, लोग आपस में मिलें, बातें करें, ताकि दिलों की जो दूरियां हैं वो दूर हों और लोगों में खूब सारी मोहब्बत बढ़ सके. पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद. I think it's a great honor for Lahore to host this world exhibition of performing arts, and this is a great credit that this has gone on for more than 18-19 years. So primarily I stand here for two reasons. One, I want to welcome the delegates who come from all over. I understand people came from USA, all part of Europe, Asia, West Asia, and neighbors also. So a very warm welcome to all the delegates. I hope you enjoyed your stay. And I'm given to understand a lot of people came to watch your performance. People have complimented you. That's a great credit to you. But a great honor for us to welcome you to this wonderful land of Pakistan and city of Lahore. हर
Colleges and universities stimulate the mind. Our experience at the historical government college in Lahore was no different. The alumni list of this college includes Devanand and Dilip Kumar, to name just a few. The college professors and students quizzed us about our play and our thoughts about the present Indo-Pak relations. ये प्ले इतना नया नहीं, पुराना प्ले है ये इंशाल्लाह. सो ओवर द इयर्स पे रिएक्शन क्या हुआ है लोगों का, जो आपके इंडियन ऑडियंस होते हैं? एक तो स्क्रिप्ट अच्छी है, ऊपर से प्रेजेंटेशन में हमने बहुत जान लगा दी है, और वाकई हर शो हम जो है पूरी एनर्जी के साथ पेश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें जगह जगह से मिला है. बहुत लोगों के बारे में ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ देखा नहीं है जो हुआ है पार्टीशन के वक्त, लेकिन फिर भी ये ड्रामा देखने के बाद उनको ये महसूस होता है कि सचमुच ऐसा होना चाहिए कि सब दोनों तरफ के लोग एक होने चाहिए. ये अच्छा नहीं है कि हम यहाँ के हैं आप वहाँ के, सब एक जैसे ही है, तो क्यों हम ये कहें कि हम भारत के हैं, हम पाकिस्तान के, सब लोग एक जैसे ही है. तो युद्ध भी यही चाहती है कि ऐसे ना हो, दरार ना हो, सब एक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है. ये झगड़े किस काम के हैं. They also hosted a grand brunch for us and presented each one of us with a copy of their college magazine, The Ravi. The bonds built were so enduring that I even wrote an article on the people of Lahore for this very magazine in the following year. Our experience with the professors and students of the English department of the University of Punjab proved to us that the intellectual classes in Pakistan were indeed a very stimulating and pleasant lot. Is it a pressure for you? First thing is it pressure for you? No, इस मामले में कतई नहीं है हमारे यहाँ pressure. It differs from family to family. मुस्लिम माशरे में इतना उसको वो नहीं समझा जाता है, थोड़ा कुछ हद तक अब भी मायूब समझा जाता है. That's quite true. लेकिन ये आम नहीं है. और लड़कियों को मतलब लड़कियां काम कर रही है, इसका कुछ भी हमें बुरा नहीं लगता या फैमिलीज को बुरा नहीं लगता, बहुत इज्जत मिलती है. सपोर्ट करते हैं. इवन दे फील प्राउड दैट आवर डॉटर, आवर कजिन और सन आर वर्किंग इन ड्रामा. बहुत ज़्यादा ये भी है कि जिस कल्चर में डांस अप्रिशिएट किया जाता है, वहाँ पे बॉडी इनहिबिशन बहुत कम होती है. नहीं, लेकिन वो तो वही वाली बात है ना कि कॉन्ट्रडिक्शन तो है ना सोसाइटी में, बिकॉज ड्रामा इज सेल्फ एक्सप्रेशन. आप उसको कितना भी सेंसर करेंगे, कितना भी रोकेंगे, वो फिर किसी और तरीके से सो यू कैंट रियली स्टॉप इट. इट्स ह्यूमन नेचर. इस पे प्लीज बनाइएगा आप एक समझौता, जरा तंजिया चीज और एक बॉर्डर पे जो जी एक्सप्रेस का नाम समझौता है. ड्रामा इस पर लिखा जा सकता है बहुत अच्छा, और उसमें फिर दोनों पॉजिटिव और तंजिया चीजें दोनों आ सकती हैं. बॉर्डर का तो मैं कॉमेडी करना चाहूँगा. ब्लैक कॉमेडी. नहीं, ये बता रहे हैं कल बॉर्डर पे गए सिंपली टू व्यू दैट सेरेमनी, और वो पूरा नाटक था विद दोस पीपल सैल्यूटिंग, और वो नाच रहे होते हैं सलवार पहनी हुई. रिचुअल है. तो हमने उसको नाम दिया खुन्नस गिविंग सेरेमनी. Actually, that would be very good. वो जूतियों का इश्तिहार है कनाडा. यही कहना है, यही जीना है, यही मरना है, कुछ कहना है, यही कहना है, यही जीना है. We undertook a very enlightening car journey with the University of Punjab student who explained to us the class system prevalent in Pakistan. एक एलीट क्लास की ये राय है, ठीक है. एलीट और फिर स्कॉलरली, एलीट प्लस स्कॉलरली, खाली फाइनेंशियली एलीट नहीं है, अच्छा, बल्कि स्कॉलरली. ये बात जो है ये आप किसी एक आम शख्स जो होगा ना हमारे मुल्क का, उसके आगे अगर आप ये बात करें तो आपको अपना जो है ना वो बड़े ख़तरे में पड़ जाएगा. अच्छा, क्योंकि दे हैव इमोशनल एफिलिएशन. एलीट क्लास जो है या स्कॉलरली क्लास है, उसमें भी फिर ये क्लासेस हैं, कुछ हैं जो बहुत फेवर में हैं, कुछ हैं जो फेवर में नहीं हैं. अच्छा, तो वो
इतनी ज़्यादा जो डिवीज़न है ना हमारी सोसाइटी में, वो बहुत ज़्यादा मसले का बायस है। तो आप जनरलाइज ना करें। हाँ हाँ हाँ। The daily evening Wagah Atari border flag ceremony between the border forces of both nations has become a must-see for tourists. Only difference, we saw the tamasha from the Pakistani side of the border. The melodious song Meri Jaan Hai Pakistan, sung by a lady singer, was particularly pleasing to the ears. The pumped up soldiers from both sides of the border confronted each other with fire in their eyes and josh in their bellies. My colleague Nisar and I, both hockey buffs, so we managed to go for a India-Pakistan hockey match in the national stadium. It was the Champions Trophy championship. We didn't want to go empty-handed. We wanted to do something different. So we were keen to go into the stadium with flags of India and Pakistan. So we had to search, and our search took us to a place called Lakshmi Chowk. Now there is a Lakshmi Chowk in Lahore. So we went to Lakshmi Chowk. It took us good 20 minutes. We searched shop number 1, shop number 2. Finally in the second shop we got an Indian lovely silk flag, tricolor. We picked it up. We picked up a Pakistani Chand Sitara flag and told the shopkeeper to mount it on sticks and quickly went. We reached the game 10 minutes late. India was already down by 1 goal. About 15 minutes later I said I must unfurl the flag. So what I did is I first opened the Pakistani flag. Then I unfurled the Indian flag, and I was the only madman with both the flags in a stadium of 20,000. There was no tricolor in that stadium. A Dawn newspaper photographer also shot a photo of me, and the next day's paper gave a caption saying a Pakistani supporter waves the flags of both nations. So the editors had been fooled by my beard and my salwar kameez.
In Ashfaq Khan, the affable Punjab tourism officer, we had the best guide in Lahore at our service. Ashfaq took us back into the pages of history. He first showed us the famous Dilli Darwaza, the historical gate which actually points towards Delhi. This is the gift from Victoria Albert Museum, London. This is the Delhi gate. Wazir Khan Mosque. This is the fort, and this is the Badshah Masjid. This royal bath was used during the Sikh period as a Marud Khana, as a gunpowder ammunition department. This is the water channel on the top. ये सारी पानी की एक नाली है जिसमें से गर्म हमाम का वो सिस्टम था. You can see the water hole here. So there are many water channels inside the walls to provide hot and cool water to the different part of the Shahi Hamam. ये मूवमेंट का शॉट भी नहीं सर, मूवमेंट का शॉट भी मज़ा आता है ना ऐसा धक 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 धक. सॉरी एक मिनट यार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा. I managed to hop across to the historical Lahore Gymkhana Cricket Club grounds with my friend Raina Khan to witness a few minutes of a local club game. No less than the most famous of Pakistani cricketers, Imran Khan and later Wasim Akram, learned their craft on this very ground. Lahore by night is a wonderful experience. We passed a brightly lit Lahore GPO en route to the all-night food street in the Anarkali area of Lahore. गणपति बापा चल रहा है क्या? हाँ लाइटिंग है सब जगह. My chemical engineer friend Wasim Rabani, a great host, treated us to the best mouth-watering Mughlai food we had on the tour. That is, we ate while Wasim smoked. The food street is unique. It has a zillion food stalls serving you mouth-watering kebabs, rotis, the sweet firni and much else. We want a liberal society because he wants to also, I mean, for selfish reasons as well, because he wants to get aid from America and the Americans are very clear now. Okay, you know, if you want aid from us and you show to us that you're a liberal open society and not a, you know, because why should we fund a country that is on the brink of, you know, militancy and stuff. So, and also they realize that you know, Pakistan is an experiment. They're like, okay, there's an Iraq way of going and then there's a Pakistan way of handling Muslim societies. You can go in and bomb everything out, or you can help build a society, make it into a liberal, you know, tolerant place, and then hopefully, you know, deal with the militancy that way. Raina later treated our group on behalf of some fellows of the Leadership and Development Lead Group of Pakistan to a heavenly meal in Lahore's famous terrace restaurant, the Cuckoo's Nest. The Indian cricket team, which had toured Pakistan in 2004, had also dined in this very restaurant. The site of a lit-up Badshah mosque constructed by Emperor Aurangzeb and the Gurdwara Dera Sahib constructed by Maharaja Ranjit Singh. The Lahore Fort is a sight to behold from the rooftop restaurant. There's one more lovely anecdote. On the last night in Lahore, after a lovely meal in this Cuckoo's Nest restaurant, we took autos to go back to our, hotel room. One of our autos was stopped by two policemen, armed policemen at a checkpoint. So they checked the auto, they got these people out, and our boys had got photocopies of their passport. So they immediately showed that and said that they had come with a drama troupe from India. The policemen were immediately apologetic. They said, "Humko malum nahi tha, maaf karo.
ऐसा है तो अभी आप देखो इंडिया से आए हैं हमारे साथ चाय पी के जाना. So they forced them to have some chai, some gupshup about Shah Rukh Khan and all that happened, and then our boys came back. We left Lahore with a heavy heart. We had made many friends. The common people of the city had bonded with us at an emotional and spiritual level. The train passed quickly through Lahore's suburbs. Very soon the Devanagari greeting of Swagatam and Welcome to India came into view. The international border which came next was quite a sight, demarcated by an imposing double barbed wire fence. It was also unusual to see a Sikh border security force soldier on horseback escorting the train into India. Sat Sri Akal ji. He waved back when I greeted him with the Sikh greeting of Sat Sri Akal. I think we definitely build bridges with the people of Lahore and the people of Pakistan, because after we came back to Pune in 2004, the Pakistani band Strings also followed us to Pune and performed in Koregaon Park, no less. Now, the next year, we went back to Pakistan with a smaller play and a smaller cast, but we went. Now, as you can see from the film, the people, the emotions and the places are the same in India and in Pakistan. I hope you enjoyed the journey. Namaskar. Khuda Hafiz. से कोई आए कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साज